Hello, dear student. This is Sajjad Ahmed Khan, the founder of Brilliant English Academy, and this is free online English coaching class for you. Dear student, I hope you like my videos. So, today I come with a new section of our HSC syllabus, that is section 3, a dedicated section for writing skill, and in that we have to learn 3.1 summary writing. So dear student, in that summary writing, I would like to say something about you before presenting my videos. Dear student, summary writing is called Saransh Lekhan in Marathi and Khulasa in Urdu. So dear student, this is a very important questions for getting good score or good marks in 12th standard. Dear student, this question is asked in high school from 9th standard to 10th standard and 11th and 12th in junior college and as well in senior college or in all boards just like a CBSE board, state board and IESC boards. This question is asked. In fact, it is also asked in various competitive exam in English subject. So dear student, let's see about summary writing. Before that, you have to give an unseen passage. So you have to go through that and you have to solve all the activities before comes to the summary questions. And second thing is that in third B maybe it is asked for 3 marks in our HSC board of State Board of Maharashtra. So the nature of question is that write a summary of the given passage or the above passage and suggest a suitable title. So let's learn and go to find out more about summary writing. And before that, you don't forget to subscribe my channel Brilliant English Academy. Just press the bell icon and don't forget to like, comment and share because it is my motivations for making such a videos for you. So go to watch summary writing sections. Thank you very much. Dear student, in our Maharashtra State Board's syllabus in HSC, we have section 3, a dedicated section for writing skill, Lekhan Kaushalya, 3.1 summary writing. So let's see the summary writing, how to do summary writing. Summary is a record in the reader's own word that gives the main points of a piece such as a newspaper, article, a lecture, a passage, a chapter or even a whole book. म्हणजेच वाचकाने स्वतःच्या मोजक्या शब्दात क्रमबद्ध केलेले लिखाण म्हणजेच सारांश लेखन किंवा समरी होय. जसे वर्तमानपत्र, लेख, लेक्चर, परिच्छेद किंवा एखाद्या पुस्तकाचे. Types of summary. There are 3 types of summary mainly. Number 1, outline. Second, abstract. Third, synopsis. Outline means to organize a written ideas about a topic or a thesis into a logical order. Means Ruparekha. Second, abstract. Abstract means a short piece of writing that tells you the main contents of a book or a speech, किसी दस्तावेज का मूल सारांश. And third, synopsis means it is a brief summary of the major points of subject, a written word or a story. सार या संक्षेप रूपरेखा. Let's turn towards icebreaker activities. Discuss in pairs and guess the correct alternative for the following. Number 1, to summarize means A, put information in a chronological order. B, to recapitulate the main points in selection. C, to introduce new information. D, to write one's opinion about selection. Sania, let me know your answer. A, right answer. Very good. To summarize means put information in a chronological order. Very good. Second,
The type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is A. Outline, B. Report, C. Synopsis, D. Written summary. Yes, Raju, you tell me. Synopsis, right answer. It means the type of summary that consists of a paragraph to express the main idea is synopsis. सार आणि संक्षेप रूपरेखा. Student, let's turn toward activity number 2. Here, there are various ways of incorporating other writers' work into your own writing. It means you read a textbook or an article and you can transform it into following 6 ways of writing. Let's see. They differ according to the closeness of your writing to the source writing. Match the ways of writing in brief given in column A with their description in column B. Means here we have given the match the pair. In first we have given ways of writing, and in description we have given the definition of the ways of writing. Let's see. Number 1. Summarizing. Summarizing means it includes main ideas into one's own words. Second, paraphrasing. Paraphrasing means it includes not just the main ideas but every detail expressed clearly and to the point. Third, that is précis writing. It means it includes the most essential part or the crux of the matter. Crux means main, important, मर्म किंवा निचोड. And fourth, that is quoting. Quoting, it means it must be identical to the original and match the document word by word. Fifth, that is editing, जिसको हम संपादन भी बोलते हैं और उर्दू में नवीसी इसको बोलते हैं. It means it include selection of proper lines from the given text for correction, condensation and organization, जिसमें आप अपने तौर से उसको correction भी कर सकते हो. And the last, that is gist writing. Gist writing, it means सारलेखन किंवा निष्कर्ष. Then we have D. It includes taking broader segment of the source and condensing it slightly. Summary writing. In this paragraph, we have to learn more about summary writing. Brevity is the soul of wit is one of the countless maxims coined by William Shakespeare. Brevity means sankshiptata, the state of being short and quick. It is relevant to speaking as well as writing. Brevity or concision. Concision is a Latin word. It also means brevity. Is the cutting out of unnecessary word while conveying an idea. It aims to enhance communications by eliminating redundancy without omitting important information. Redundance means out of work, useless, nirarthak या बेकार. It means we have to follow brevity, संक्षिप्तता while we are writing or while we are speaking. Honorable and the great Shakespeare once said, to speak what is required and to write what is necessary. आवश्यक तेज बोला आणि आवश्यक तेज लिहा. उतना ही बोला जाए जितना ज़रूरी है और उतना ही लिखा जाए जितना आवश्यक है. To speak what is required and to write what is necessary is a requisite toward the development of language skill. Requisite means विशेष, प्रायोजन, necessary for particular purpose, किसी खास उद्देश्य के लिए. Next, to express in a brief the main points of written record is the summary writing skill, and that can be developed by practice. You can develop summary writing by practice. Summarizing has a definite goal. Here we have
The purpose of a summary is to give the reader a clear, objective picture of the original text. Most importantly, the summary restates only the main points of text or a lecture without giving example of detail such as dates, number or statistics. जब आप summary करेंगे example, details, dates, number या statistics information को आप उसमें include नहीं करेंगे. Do's of summary writing. समरी करते वक्त आपको क्या रूल्स को फॉलो करना है या क्या करना है. नंबर 1, रीड एंड रीरीड द पैसेज को दोबारा पढ़ना है, एक या दो बार. अंडरस्टैंड इट, पढ़ते वक्त उसको समझना है. रीड द इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. बहुत बार क्वेश्चंस में आपको समराइजिंग के पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, तो लेट यू शुड बी एक्सप्लोर दैट पॉइंट्स ओनली. फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू समराइज. आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और आपको उसको एग्जैक्टली उसको पेन डाउन करना है. आइडेंटिफाई द मेन आइडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. आप अपने आप को भी ये सवाल पूछ करके ये आइडेंटिफाई करके मेन आइडियाज को वो क्लियर कर सकते हैं. एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे बोर्ड एग्जाम में हमको पहले 3A में अनसीन पैसेज दिया जाता है, उस पर हमको एक्टिविटीज करना होता है. एक्टिविटीज करते वक्त ही हमको पता चल जाता है कि इसमें इंपॉर्टेंट आइडियाज क्या है, क्योंकि हम एक्टिविटीज में वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पर ही हमको क्वेश्चंस या एक्टिविटीज पूछा जाता है. सो इट इज वेरी क्लियर. फॉर्म शॉर्ट सेंटेंस ऑन योर ओन. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आपको अपने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए, ताकि आप 300-350 वर्ड्स को लगभग 100 वर्ड्स या 120 वर्ड्स तक हम उसको कंसाइज कर सके. कनेक्ट द सेंटेंस यूजिंग लिंकर्स. आपको लिंकर्स का इस्तेमाल करते आना चाहिए, जैसे कॉन्जंक्शन है, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, ये आपको करते आना चाहिए. रिमूव रिडंडेंट वर्ड्स. रिडंडेंट मीन्स आउट ऑफ वर्क, यूजलेस. बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, बहुत बार कोटेशंस दिए जाते हैं, सेइंग्स दिए जाता है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, डेटा दिए जाते हैं. तो यू शुड अवॉइड दैट रिडंडेंट वर्ड्स और अ सेंटेंस फ्रॉम द की सेंटेंस. ओमिट डिटेल्स. आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, उसको ओमिट करना है, खारिज करना है. अवॉइड योर ओन इंटरप्रिटेशन. आपको अपनी पैरेलल कमेंट्री नहीं करना है, आपके विचार व्यक्त नहीं करना है. बहुत बार इंग्लिश मीडियम के, साइंस के अच्छे इंग्लिश वाले स्टूडेंट अपने तौर से ऐसे राइटिंग के जैसे समरी को लिखते हैं और 2-2 पेज समरी लिखते हैं, तो ये गलत होगा. समरी करते वक्त आपको क्या नहीं करना है. डोंट इंक्लूड. आपको कोई नई चीज को इंक्लूड नहीं करना है. एक्सक्लूड. आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक्सक्लूड नहीं करना है, उसको निकालना नहीं है, खारिज नहीं करना है, ओमिट नहीं करना है, डिलीट नहीं करना है. यू डोंट ऐड योर ओन पर्सनल पॉइंट और योर पर्सनल व्यूज. आपको एडिशन नहीं करना है. डोंट कमेंट और गिव पैरेलल कमेंट्री टू दैट स्टोरी. ये नहीं करना है आपको. गिव एग्जांपल्स. आपको कोई पैरेलल एग्जांपल, पैरेलल स्टोरी नहीं बताना है, रिलेटेड एग्जांपल्स आपको नहीं सेट करने हैं, नहीं लिखना है, तो ये आपको नहीं करना है. यूज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर समरी राइटिंग. स्टेप 1, रीड द आर्टिकल ट्वाइस. आर्टिकल को आपको दोबारा पढ़ना है. स्टेप 2, आस्क क्वेश्चन अबाउट द पर्पस ऑफ राइटिंग. आप क्यों लिख रहे हो, आपको पर्पस को समझना है. स्टेप 3, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया. आपको मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. स्टेप 4, राइट द फर्स्ट ड्राफ्ट. पहले आपको अपना एक रफ या कच्चा ड्राफ्ट लिखना है. स्टेप 5, रिवाइज योर फर्स्ट ड्राफ्ट एंड एडिट इट. पहला जो ड्राफ्ट आपने लिखा है उसको लिखने के बाद फिर से आपको उसको दोबारा लिखना है. एंड स्टेप नंबर 6, राइट द फाइनल ड्राफ्ट. और आखिरकार फाइनली आपको आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो लिखना है. बट डियर स्टूडेंट, we have summary writing questions for 3 or 5 marks. We have a specific time allotted for exam, that is 3 hours. If we follow all that 6 steps at the time of exam, so it is a very harmful for us. So it is better in your class or while you are practicing this question at your home. So you just follow
first three steps in exam, because we have given an unseen passage, we have to solve activities on it. So during solving that activities हमको ये ख्याल में आ जाता है कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है. और एक इम्पोर्टेंट बात, समरी को टाइटल देना ना भूलें. लेट्स स्विच ऑन टुवर्ड्स मार्किंग स्कीम. It is for 3 marks in our HSC board, in State Board of Maharashtra. So, title is for 1 mark, covering essential points 1 marks, and third, language, style and grammar for 1 mark. It means while you are writing the summary, you should give a title in big and bold letter. It must be put on extract. It must be underlined. So the importance of, the uses of, the advantages of, disadvantages of, uses of and abuses of, or the name of that particular scientist, scholar or a sports person is given there. You should write in title. You should cover all the essential points sometimes that are given in questions. And last, language, style and grammar. So that is also essential and it carries 1 mark. So totally the marking scheme is 3 marks for summarizing. I hope you understand better and you will score good mark in summary writing. So thank you for your patience listening. Of course, dear student, you like my presentation on summary writing. Dear student, summary writing is a day-to-day activity in our life too. Just you have watched a movie, a new movie, and your friend asks a story to you, and then you elaborate this story in your own way. That is a summary writing. जैसे आप कॉलेज में लेक्चर अटेंड करते हो और आपका दोस्त कोई एब्सेंट है क्लास में, वो आपको फ़ोन करके पूछता है कि आज कॉलेज में क्या हुआ, सर ने क्या पढ़ाया, और जो डिस्क्रिप्शंस आप उसको कॉलेज का देते हो, दैट इज़ ऑल्सो समरी राइटिंग. सो समरी राइटिंग इज़ our usual activity in day-to-day life. So dear student, I hope you like my presentation and don't forget to subscribe my channel and tell your fellow friends to subscribe it. Thank you very much. Thank you very much.